Very good morning, children. We are on the topic of calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. When a new partner is admitted in the firm. It was explained. Now question number 7 and 8. Yesterday I would like to explain before you, and with the help of video you can deserve the information and how to solve the questions and how to calculate the new profit sharing ratio when a new partner is admitted, when the firm is reconstituted. So my dear children, in question number 7, near about 4 or 5 terms given, you know it very well. And question number 7, this one is the question given. X, Y are two partners sharing their profit in the ratio of 3:2. Z, a new partner is admitted in the firm by the X and Y for 1/5 share in the profit. Calculate the new profit sharing ratio on such cases if Z acquires his share from X and Y in their profit sharing ratio. Second, if he acquires 320 from X and 120 from Y, then what will be the new ratio amongst them? If he acquires 1/10 from X and 1/10 from Y, what will be the new profit sharing ratio? In question number 8, A and B are partners sharing their profit in the ratio of 2:1. C admitted as a new partner and A surrenders 1/4 of his share in favor of C. B surrenders 1/5 of his share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio. Now come to the point. In first question number 7, in first case, question number 7, in first case, if Z acquires his share from X and Y in their profit sharing ratio, what will be the new ratio? So my dear children, X and Y's old share, X and Y, the share is 3:2. Z share is equal to given information 1/5. Z share is given 1/5. Now Z acquires his share from X and Y in their profit sharing ratio. So X share 3/5 and Y share 2/5. I mean to say Z acquires his shares from X and Y in their profit sharing ratio. So he acquires from A
share acquired by Z from A is equal to share acquired by Z from A is equal to 1/5 into 3/5 is equal to 3/25. On the same way, just he acquires the 1/5 share of his share 3/5 in their board profit sharing ratio. He acquires the share. Share acquired by Z from Y. Old share 2/5 into 1/5 is equal to 2/25. I mean to say 3/25 acquired from A and 2/25 acquired from B. So the Z now A's new share is equal to A's new share is equal to A's new share is equal to old share minus share surrendered by X, surrendered by X in favor of Z. So old share minus whatever the share surrendered by the X, that is the X new share. X new share. Old share 3/5 minus 3/25. LCM 25. LCM 25 5 5 का 25 5 3 का 15 minus 25 on the 25 minus 3 is equal to 12/25. New share of X is equal to 12/25. And Y share, Y surrenders his share in favor of Z 2/25. So Y's new share is equal to 2/5 minus 2/25. 25 10 minus 2 is equal to 8/25. X new share is equal to 12/25. Y's new share is equal to 8/25. Just earlier I have told X and Y A B. You can suppose that and Z as C. Whatever the name given, so on. My dear children, आप देखेंगे कि X और Y दो पार्टनर हैं, शेयरिंग में प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में Z को उन्होंने नया पार्टनर बनाया, क्वेश्चन नंबर 7। और जो Z 1/5 शेयर लेता है X और Y से, ये लोग
अपने पुराने रेशियो के हिसाब से देते हैं। तो कितना x देते हैं और कितना y देते हैं। तो 3/5 अपने शेयर का 3/5 ऑफ 1/5 इक्वल टू 3/25, मतलब 1/5 इंटू 3/5, 3/25। सेम वे में y कितना देते हैं, y 2/5 इंटू 1/5 इक्वल टू 2/25 अपना शेयर सरेंडर करें। अब आप यदि 2/25 और 3/25 को जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे 1/50 आएगा, मतलब इतना शेयर ये लोग देते हैं। अब इनका न्यू शेयर प्राप्त करने के लिए x के पुराने शेयर से जितना इन्होंने शेयर दिया हुआ है उस शेयर को माइनस कर देंगे। x का पुराना शेयर है 3/5 माइनस 3/25 इन्होंने c को दिया है, तो इनका 12/25 और y का उसी प्रकार 2/5 माइनस 2/25 इक्वल टू 8/25। अब न्यू रेशियो आप पता कर सकते हैं x y z का, x y z x न्यू शेयर 12/25, x का 8/25 और z गिवन 1/20, 1/5, 25 LCM 12:8:5. The new ratio will be 12:8:5 and sacrificing ratio 3/25, 2/25, 3:2 as old ratio. This one given. This one is the first case. This way it can be solved. In second case, if he acquires 320 from x and 120 from y from given, so you can minus this way share. This one is the second case. In second case, Z acquires 320 from x and 120 from y. In second case, 320 from x and 120 from y. So simple. X new share in second case, X new share. This one that it was the first case. In second case, $320 from X. X new share 320. He is giving to the Z. So old share minus whatever the share surrendered by X in favor of Z. कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जब कह रहा है 320 from X, 320 from X से लेगा तो इसके पुराने शेयर से जितना है तेरा उतना माइनस कर देंगे। 35 माइनस 320 ये जेड को दे दिया
5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 minus 3 equal to 9/20 न्यू शेयर x का हो गया। z का z न्यू शेयर इक्वल टू 2/5 minus 120 फ्रॉम y से 120 दे रहा है, 120 माइनस कर दिया आपने, 20 एलसीएम हो गया, 8 minus 1 equal to 7/20 and 1/5 share given. So x y z new share, x y z new share, x y z new share, x share 9/20, 7/20, z 1/5. Given in the question 20 LCM 9:7:4. The new ratio 5 4 that 24 1 that 4. The new ratio will be in second case 9:7:4. क्लियर है? कहने का मतलब ये है, सेकेंड केस में ये कहा जा रहा है बेटा कि x और y से वह 320 फ्रॉम x से लेता है, तो x 320 देने के बाद उसका जो शेयर बचेगा वही नया हिस्सा होगा, तो 3/5 minus 3/20 किया गया, 9/20 आया। z से वो 120 लेता है, तो 2/पुराना शेयर 2/5 है, 2/5 minus 1/20 7/20 और 1/5 शेयर है ही इनका, तो x y z का न्यू रेशियो जो हो जाएगा 9/20 7/20 1/5। सो न्यू रेशियो 9:7:4, 5 4 का 20। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आई थिंक ये आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आपको तीसरा केस बताते हैं। 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y, सेम इसी प्रोसीजर में अब 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y, 1/10 फ्रॉम x and 1/10 फ्रॉम y, तो सीधे x का जो न्यू शेयर है कितना होगा, 1/10 दे दे रहा है minus 1/10 इक्वल टू 10, एलसीएम आपने लिया 6 minus 1, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 equal to 5/10. Y new share 2/5 minus 1/10, क्योंकि बराबर बराबर ले रहा है इक्वली उन लोगों से, इसका भी एलसीएम 10, 4 minus 1 equal to 3/10। न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो x y एंड z, 3 केस ही बता रहा हूं और जो 2 केस है सेम इसी वे में आप सॉल्व करेंगे। x न्यू शेयर 5/10, y new share 3/10 and 1/5, z share given. Just this way
LCM 10, 10 1 जा 10, 5 is to 10 1 जा 10, 1 3 3 is to 5 2 जा 5 is to 3 is to 2. The ratio will be, new ratio will be 5 is to 3 is to 2, and sacrificing ratio 1 10 1 10, 1 is to 1. That is it. Now come to the question number 8. Question number 8. Question number 8. In question number 8, try to observe the question. A, B are partners sharing their profit in the ratio of 2 is to 1. 2 is to 1. C, a new partner is admitted in the firm and A surrenders 1/4 ऑफ हिज शेयर. यहीं पर थोड़ा सा बताना है. अभी तक आपने पढ़ा है फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, एंड बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर. बी जो है अपने शेयर का 1/5 देता है, ए अपने शेयर का 1/4 देता है, 1/4 देता है. A, B, two partners sharing their profit 2 is to 1. The old share of A and B is equal to 2/3, 1/3. Clear? Now again come to the point.